terms associated with the motion. Okay, so first of all, we know that position is described in rectangular coordinate system. So rectangular coordinate system can be either symmetrical coordinate system or your Cartesian coordinate system. Alright, so both the coordinate systems are rectangular coordinate system. जब भी हम लोग position को describe करते हैं, उसको description के लिए हम लोग या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे या फिर ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट ऑफ दैट coordinate system of course is represented as O, or is called the origin. If a body changes only x coordinate or only y coordinate, then this kind of motion is called one dimensional motion. Let's suppose we have a body whose y component is 1, right? So body is lying here. अगर with respect to time अगर 1 second 2 second या 3 second पास हो चुका होता है, उस टाइम में अगर बॉडी इस पोजीशन से उठकर इस पोजीशन पर मूव करती है, पहली पोजीशन थी this one, second position is this one, then is in this case इस बॉडी का x component चेंज होगा because the direction of motion is towards x-axis. Okay, there is no change in the y direction. y component पहले भी 1 था और अभी भी 1 ही है. चेंज क्या हो रहा है? x component पहले ये 0 पर था, फिर 1 पर, 2 3, अब लेट्स सपोज ये 4 पर आ चुका है. इन दिस केस x component चेंज हो रहा है, y component चेंज नहीं हो रहा है. या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इस केस में 1 पर हमारे पास x कॉम्पोनेंट है एंड 1 पर ही y कॉम्पोनेंट भी है. सो एंड यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया. इन दिस केस इफ अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम 1 in the x direction and along to the y direction, बॉडी की पोजीशन चेंज होते होते इस पॉइंट पर अगर आ जाए, देन इट मीन्स कि अब x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है. x पहले भी 1 था, सेकेंडली भी 1 है, थर्ड टाइम भी 1 है, फोर्थ टाइम भी 1 है. क्या चीज़ चेंज हो रही है? इट्स पोजीशन ऑन y एक्सिस. ठीक है. सो अगर सिर्फ x एक्सिस पर चेंज हो या फिर सिर्फ y एक्सिस पर चेंज हो, देन दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें आपके पास या तो x की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी या फिर y की वैल्यू चेंज होगी. बट इफ अ बॉडी चेंजेस बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई बॉडी लेट्स सपोज इन दिस केस इस तरह ट्रैवल करती है, इट मीन्स इसका x कंपोनेंट भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है और y कंपोनेंट भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट केस में दिस वाज द x कंपोनेंट एंड दिस वाज द y कंपोनेंट. सेकंड केस में दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट. थर्ड केस में दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट. सो x और y दोनों कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं. देयरफॉर दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल motion. So the first term that we are going to discuss today is distance. Actually, distance is the length of the path traveled between two points. So let's suppose we have 2 points A and B. And let's suppose ये आपके पास आपके स्कूल से लेकर आपके घर तक का distance है. And you say that this blue line indicates the path that you follow in order to go to your home, राइट. लेट्स सपोज ये वो रास्ता है, ये वो रोड है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है अपने घर तक पहुंचने के लिए. इन दिस केस द लेंथ ऑफ दिस रोड, लेट्स सपोज ये रोड आपके पास 2 किलोमीटर्स लंबी रोड है. इन दिस केस दिस लेंथ 2 किलोमीटर्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ योर होम फ्रॉम योर स्कूल, राइट. सो जो भी हम पाथ जिस पाथ पर हम ट्रैवल करेंगे उसकी टोटल लेंथ क्या है, दैट विल बी योर डिस्टेंस. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल एक्स, डेल आर, डेल एस, डेल एल, डेल डी एट्सेट्रा. सो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं. कभी कुछ केसेस में एक्स से रिप्रेजेंट होगा, कुछ केसेस में आर से, कुछ केसेस में एस से, एल से या डी से. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या किसी भी टॉपिक में कौन सी टर्म दी गई है. ओके, दीज ऑल आर द सिंबल्स ऑफ डिस्टेंस. साथ ही ये डेल हम लोग इंक्लूड करते हैं. डेल किस लिए यूज़ होता है ये मैं बताऊंगी.
So basically, del x is the change in distance, del r is also change in distance, del s is also change in distance, del l and del d are also change in distance. Okay, these are just the change in distance. del का मतलब change है, that is आप इसे usually delta भी कह सकते हैं, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे. Okay, so in this case, whenever we talk about distance, it means we are talking about distance between 2 points. So पहले अगर डिस्टेंस ज़ीरो था, अगर आप अभी स्कूल में करें, इट मीन्स कि आपके स्कूल पे आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 0 किलोमीटर है. जैसे ही आप डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं एंड अपने एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं, देन आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दिस केस इज़ 2 किलोमीटर. सो यू स्टार्टेड फ्रॉम 0 किलोमीटर्स and ended on 2 kilometers. So 2 kilometers minus 0 kilometers becomes your change in position of that object. Okay. Its SI unit is meter. Of course, as we know के distance को हमेशा meters में represent करते हैं. It's a scalar quantity. Alright, here we don't have to include the direction because as we know that इस केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी डायरेक्शन है, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है. इस केस में this distance is just concerned with the magnitude of length, not the direction of motion. जब भी आप डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, इस केस में हम लोग डायरेक्शन को नहीं लेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि लेंथ कितनी है, किस डायरेक्शन में है, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे. देयरफॉर वी डोंट हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन एंड इट्स देयरफॉर अ स्केलर क्वांटिटी. इट हैज़ नो डायरेक्शन. इन दिस केस द ब्लू लाइन, आई थिंक आपको शायद विजिबल हो यहाँ से, दिस ब्लू लाइन is actually your distance, right? Coming towards displacement, while displacement is the shortest directed distance between 2 points. First of all, it's the shortest distance. Secondly, it has direction, right? So the distance which has the shortest magnitude, it means अगर आप पॉइंट ए को लें एंड पॉइंट बी को लें तो इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर अब जब भी दो पॉइंट्स लेंगे उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करने के लिए एक साइड पर एरो लगा देंगे. इस टाइम हम ए से बी की तरफ हमने मूव किया, देन ए से बी की तरफ ही एरो हेड लगाएंगे. ओके, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is this straight line. Directed distance का मतलब है it should start from the initial position or the starting position and would go to the final position or the ending position. ठीक है? So the shortest directed distance between 2 points is called displacement. In this case, it's a vector quantity and it's represented by del x or del r, del s, del l, and del d. Also, you have to remember that you have to draw this little vector on your del x, del s, and del l because you have to show that this displacement is actually a vector quantity. Okay, so हमने पहले भी पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर्स के केस में. This vector quantity is all the vectors quantities are always represented by a little arrow above your symbol. So in this case, जैसे हमारे पास डिस्टेंस के केस में del x था, in this case हमने del x के ऊपर ये little arrow डालना है because in this case we have to include the direction as well. So जब भी किसी quantity की direction भी आपने mention करनी होगी, उसके ऊपर एक छोटा सा arrow आ जाएगा. अगर direction included नहीं है, जैसे इस केस में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन नहीं थी, सो कोई एरो नहीं था. इन दिस केस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट शुड हैव एन एरो अबव द सिंबल. Okay, and a symbol exactly वही यूज होंगे. Its SI unit is again meter and it is always represented by a straight line with an arrowhead. Okay, it should be represented by a straight line with an arrowhead. So in this case ये जो red line straight line है, this is your displacement.